Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I am going to share with you a very beautiful hairstyle which is perfect for any occasion or a festive season. So उसके लिए हम पहले बालों का साइड पार्टीशन कर लेंगे और उस साइड पार्टीशन से ही हम ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेंगे। इसके बाद हम बाकी के सारे बालों को क्लचर से टाई कर देंगे और सामने के पार्टीशन में से एक छोटा सा सेक्शन निकाल के उसे भी सेपरेट कर देंगे। अब हम सामने की तरफ से रेगुलर फ्रेंच ब्रेड बनाएंगे। अब इसके लिए सामने के बालों को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और रेगुलर ब्रेड बनाते हुए दोनों साइड से एक एक सेक्शन ऐड करते जाएंगे। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से रेगुलर फ्रेंच ब्रेड बना लेंगे। अब दोनों ब्रेड्स को एक साथ टाई कर लेंगे। अब सामने की तरफ से जो हमने सेक्शन सेपरेट किया था उसमें से एक छोटा सा सेक्शन निकाल देंगे। अब इस सेक्शन को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए लूप बनाएंगे और एक यू पिन से इस स्ट्रिप को बाहर की तरफ खींचेंगे। हल्का सा लूप को लूज करते जाएंगे। इस तरह से इस स्टेप को एंड तक फॉलो करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बॉबी पिन को लेकर उसमें गोल्डन पर्ल ऐड करके हेयर स्टाइल को डेकोरेट किया है।
हेयर स्टाइल को फिनिशिंग लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे यूज़ किया है। So if you like this video, then please do let me know in the comment section below, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.